in this new video, and here I will share share how to add here I will add some links and image in my web page. एंड इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसके बाद उसमें हमने ये जो सारे बॉयलर प्लेट्स हैं HTML के जो एसेंशियल टैग एंड एसेंशियल जो टैग्स एंड जो होते हैं फाइल्स में जो कंटेंट होता है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो ये आप नहीं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने उसी वाले को कंटिन्यू करते इसमें कुछ इसमें मैं एक्सटर्नल लिंक्स एंड सोशल मीडिया लिंक्स एंड इमेज ऐड करना सीखता हूँ। सो लेट्स सी। अब हेडिंग टैग का देके हमने वेब पेज को हेडिंग दे दिया एंड देन वी हैव आई यूज एंकर टैग इसके थ्रू मैं लिंक्स ऐड करूँगा। अच्छा मैं सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे। तो HTTPS फिर हम लोग पहला तो /google.com फिर go to Google फिर देन लोग नेक्स्ट यूज करेंगे। search.com go to Twitter /facebook.com to Twitter क्लिक आउट नट करता हूँ एंकर टैग करो एंकर फिर लिंक इंस्टा प्रेस करता हूँ लाइव सारे जो लिंक्स एक ही लाइन पर मिल रहे हैं। कम द लर्निंग वाला पेज एंड द हेडिंग एंड द लिंक्स दीज आर द लिंक्स। लेट्स आई क्लिक सेपरेट फाइल सबसे पहले इसमें वो PR यूज करके वो सेपरेट कर देते हैं। अच्छा अलग अलग लाइन पे है सो और अच्छे तरीके से हम लोग इसमें वो लगा सकते हैं। तो यूज ना करके सेलेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा और स्पेस तब भी थोड़ा सा इसके थ्रू डिव यूज़ करके भी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं न्यू लाइन पे। अगर हम लोग यहाँ पे फिर PR लगा देते हैं क्या होगा देखते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। सो दो तरीके से सेपरेट कर सकते हैं इनको तो डिव टैग का एंड अदर इज BR टैग का थोड़ा सा सेपरेट। सो इस तरीके से हम लोग इसमें आप लिंक ऐड कर सकते हैं। लेट्स क्लिक वन तो हमें HTML मिल जाएगा। गूगल पे लेंगे देन बैक एक ही पेज में फिर से आना पड़ रहा है बैक फेसबुक पे ले आया। तो हम चाहते हैं कि अब ये जो लिंक्स हैं वो न्यू टैब पे खोल लेता हूँ यहाँ पे ऐड करने होगा टारगेट एट्रीब्यूट टारगेट
टारगेट एक्टिविटी हम लोग ब्लैंक इसको करते हैं, फिर लिखते हैं सेव, देन गो एंड क्लिक द गूगल। ठीक है, सेम ही लाइन पे मैं चाहता हूँ कि ये अगले जो है वो दूसरे पेज पे लिखो। फर्स्ट टाइम टॉप ब्लैंक, लेट्स कंप्लेन सेव, देन गो क्लिक। सो इस टाइम ये हो रहा है कि टारगेट इसके थ्रू हम लोग इसको न्यू पेज पे ओपन कर सकते हैं सारे लिंक्स को। सो लेट्स आई वांट टू add this in every file list here WhatsApp, Instagram, न्यू पेज लगा फेसबुक, न्यूज़ पेज लगा ट्विटर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट यूज़ करके लिंक्स तो ऐड करके उसको हम लोग अलग अलग न्यू टैब पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे इमेज ऐड करने का, हाउ वी कैन ऐड इमेज। तो इमेज टैग का यूज़ करेंगे, इमेज एंड वहाँ तो गूगल से हम लोग कोई इमेज ले लेते हैं। नेचर इमेज, इसको न्यू ओपन न्यू टैब पे ये वाली सबसे अच्छी लग रही है। कर लेते हैं इसको एंड लेट्स अपलोड हियर दिस इमेज। हेल्प पे अगर इमेज लोड होगा तो एरर लिखा चाहते हैं कि अगर इमेज लोड ना होगा तो ये एरर लिखा सो सेव एरर आ रहा है, इमेज शो नहीं कर पा रहे। सो हमें ओके इमेज का लिंक देना पड़ेगा ये कॉपी कर लेता हूँ। Here you can see the image। मैं वेट कर रहा हूँ इसको पूरा वेब पे अगर ये एडिट करना चाहेंगे तो हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज भी ऐड करना सीखेंगे। सो इस तरीके से हम लोग वेब पे कोई इमेज ऐड कर सकते हैं एंड इसमें एक और दूसरा तरीका कर सकते हैं हम लोग इस पर अपलोड अपने डिवाइस से कोई फाइल इसमें हमें सबसे पहले इसमें फाइल अपलोड करना पड़ेगा फोटोज़ एंड देन उस पर जो एड्रेस होगा उसको हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ से एक्सटर्नली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।